अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर वाइज या पोर्शन वाइज जिस तरह से आपका कंप्यूटर का पेपर आता है और किस तरीके से जो है वो शॉर्ट एंड लॉन्ग आते हैं, और तमाम के तमाम 5 पेपर्स हमने आपके लिए इकट्ठे कर दिए हैं एक ही जगह पे। और हम अपनी वीडियो के अंदर आपको सोल्यूशन भी बताएंगे बहुत से क्वेश्चंस का जो मैथमेटिकल है, जो सॉल्व होने वाले हैं। वो आप बहुत से क्वेश्चंस के आपको आंसर भी बताएंगे। तो इसमें आपके लिए ये फायदा है कि उर्दू वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उर्दू में कंप्यूटर पढ़ी हुई है वो भी यहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मिनट तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। मसले को हल करने में एल्गोरिदम का किरदार बयान करना है। रोल ऑफ एल्गोरिदम लिखना है। ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। What is meant by divide and conquer rule? What do you mean by the base or radix of the number system? बेस को हम रेडिक्स भी कहते हैं। कन्वर्ट एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1 और 0 0 0 0 0 1 और बाइनरी है इनटू डेसिमल में इसको जो है वो कन्वर्ट करना है। हाउ इज डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर? ये आपने बताना है कि कंप्यूटर में डाटा को किस तरीके से जाहिर किया जाता है, यानी किस तरीके से स्टोर किया जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट टू एनी फोर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है। व्हाट इज प्रोटोटाइप कन्वर्ट 999 डेसिमल का है, इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। व्हाट इज मीन बाय एक्ट इट आउट, ये आपकी प्लानिंग का जो है प्लानिंग का सॉल्यूशन की एक स्ट्रेटजी है। और डिफाइन वैलिडेशन, define binary number system, write down the names of the types of the computer memory। कितने टाइप्स की जो है वो कंप्यूटर मेमोरी है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। फाइंड डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, व्हाट इज मीन बाय कैंडिडेट सॉल्यूशन। डिफाइन प्रोटोटाइप, कन्वर्ट A23 डेसिमल का है, इसको आपने A23 हेक्साडेसिमल का है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। व्हाट डज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। प्रोटोटाइप कन्वर्ट A23 हेक्साडेसिमल का है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हाउ डज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वर्क, किस तरीके से वर्क करती है। डिफरेंस बिटवीन डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम। उसके बाद है जी व्हाट इज मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैंडिडेट सॉल्यूशन। व्हाट इज मीन बाय वैलिड टेस्ट डाटा। राइट 4 नेम्स ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस। कन्वर्ट, ये अगेन रिपीट हो रहा है बाइनरी टू डेसिमल वाला। डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड द स्टोरेज। लिस्ट 5 W's टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। वो व्हाट, वाई वाला, व्हेन वाले, ये जो 5 W's थे। व्हाट इज द रोल ऑफ एल्गोरिदम रिपीट हो रहा है। हाउ इज अ फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्टेड, किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें आपने सिंबल्स का भी जिक्र करना है। गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस। हाउ हेक्साडेसिमल सिस्टम कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम। इसमें आपने क्राइटेरिया को जो है वो डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से हेक्सा को जो है कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में। इसको आप टेबल के तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी आप बता सकते हैं। कन्वर्ट 1 1 0 1 1 2 बाइनरी का है ये, इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम में आपने चेंज करना है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय एक्ट इट आउट। What is the purpose of decision symbol in flow chart? What is mean by candidate solution? Convert 137 into hexadecimal number system. What is mean by number system? What is difference between memory and storage? Define flow chart. What is act it out? Write down any 2 advantages of an algorithm. Convert C9 to 1 hexa का इसको decimal में convert करना है। What do you know about non-volatile memory? How the data is stored in digital computer? What is meant by a planning a solution, what is prototype, what is meant by efficiency of an algorithm। इसमें आपने इसके वो 3 जो पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं कि किस तरीके से एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है। लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम। कन्वर्ट A23 हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस। इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं जिससे इसकी इंपॉर्टेंस का जो है वो आपको आइडिया हो रहा होगा। वाई रैम इज कॉल्ड अ वोलेटाइल मेमोरी। 1024 हेक्सा को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डिफाइन फ्लो चार्ट। व्हाट इज बाउंड्री टेस्ट डाटा। डिफाइन सेकेंडरी मेमोरी। व्हाट इज बाइट। डिफाइन एल्गोरिथम वेरिफिकेशन। डिफाइन कैंडिडेट सॉल्यूशन। Names of the steps involved in problem solving. Define binary number system. Why we call secondary memory is a non-volatile memory। और convert 357 decimal का है जी, इसको आपने convert करना है hexadecimal number system में। Write problem solving 4 steps. Write any 2 advantages of the flow chart। What is meant by test data? Describe types of the
memory. Why RAM is called volatile memory. Converts 160 डेसिमल का है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है. What is meant by act it out? What is meant by trace table? What is the use of set notation in an algorithm? इसमें आपने इसको डिस्क्राइब भी करना है और इसकी नोटेशन भी बतानी है. What is meant by hexadecimal system? Differentiate between volatile memory and non-volatile memory. Convert 156 डेसिमल का है, इसको अपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है. Write the names of the requirement of the flow chart. Draw flow chart to calculate sum of two variables. What is difference between verification and validation? How many types of memories are white names? Convert 7 डेसिमल का, इसको अपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है. Define the decimal system. और उसके बाद है जो राइट डाउन एल्गोरिदम फॉर अ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज विद सॉक्स. ये आपकी बुक में एज एन एग्जांपल बना हुआ है. राइट डाउन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो चार्ट. राइट डाउन एनी वन डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट. कन्वर्ट 010111 बाइनरी का है, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है. इसको आप टेबल के तरीके से भी कर सकते हैं और इसके को आपने जो है वो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है और नेक्स्ट नंबर में जो है वो ऐड करते जाना है, तो ये डेसिमल नंबर पे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा. राइट डाउन एनी टू नेम्स ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस. डिफाइन हेक्साडेसिमल नंबर. राइट any two disadvantages of the flow chart. Define problem. Which type of the value to be given in boundary test data. Convert 10011 binary into decimal system. Write ASCII codes of any two numbers. ये बहुत इजी, आप इसको लिख सकते हैं जी. कैपिटल ए का 65 और स्मॉल ए का जो है वो 97 लिख दें, या फिर कैपिटल ए का 65 और कैपिटल बी का लिख दें 66. डिफाइन बाइनरी सिस्टम्स. वाई वी नीड द स्ट्रेटजी डिवाइड एंड कंकर. इसमें आपने वाई बताना है कि हमें क्यों ज़रूरी होता है डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी की, कब ज़रूरत हमें पेश आती है. Define flowchart. Define trace table. Define the memory. Why we use ASCII codes. Convert 110 बाइनरी का, इसको आपने डेसिमल में वही मल्टीप्लिकेशन एंड सम वाले तरीके से. राइट शॉर्ट आंसर. Why we need the strategy divide and conquer. Define flow chart. trace table. memory को डिफाइन करना है. Why we use ASCII codes. उसके बाद कन्वर्ट करना है 110 बाइनरी को डेसिमल नंबर में. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी. राइट द ट्रूथ टेबल फॉर एक्स एंड वाई. एक्स इज इक्वल टू टूडेज फ्राइडे. वाई इज इक्वल टू इट इज वेरी कोल्ड टूडे. वाई वी यूज और ऑपरेटर. What do you mean by truth table? Write names of the two layers of the computer network model. कोई सी दो layers आप इसमें लिख सकते हैं. What is video conferencing? Write any two advantages of ring topology. What is Boolean algebra? Draw truth table for not operators. What is identity law of the Boolean algebra? Define TCP/IP. Differentiate between sender and receiver. What is the function of data link layer? Define truth table of A dot B. यानी एंड ऑपरेटर के साथ है इसका, तो इसका आपने ट्रूथ टेबल बना देना है. व्हाट इज मीन बाय ट्रूथ टेबल? राइट टू एग्जांपल्स ऑफ द प्रपोजिशन. राइट टू एग्जांपल्स ऑफ IPv6 एड्रेस. डिफाइन FTP प्रोटोकॉल. डिफाइन इंटरनेट. ड्रॉ ट्रूथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर्स. राइट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ द Boolean algebra. राइट द यूज ऑफ ट्रूथ टेबल. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम. Why addressing is mandatory for data communication. Define mesh topology. Draw compound preposition table of P plus Q plus not of P. इसकी आपने अपनी जो है वो वैल्यूज ले लेनी है 0 1 लेके, और इसको आपने ट्रूथ टेबल कंपाउंड preposition का बना देना है. Define commutative law. Write down the names of the logical operators. What is the client user interface? Define hub or switch. Write down the names of any two layers in the layered network model. Define Boolean algebra. What is meant by logical expression? Make a truth table using AND operator. Define communication. You write down a short note on hardware sharing. Why addressing is needed in data communication. Draw a truth table using NOT operator. Define commutative law. Define logical expression. What is meant by hardware sharing? What types of the connection? How to connect client and server with each other on the internet. Draw a truth table of an or operator. Write down not P for P preposition. यानी अगर आपके पास P preposition it is Monday, तो not P क्या होगा कि it is not Monday. Write any two names of the law of the Boolean algebra.
why we use server computer, what protocol, define router, draw the truth table of preposition p dot q plus p, यानी p dot q का मतलब है p and q, और उसके साथ फिर और का कम्बिनेशन आपने बना देना है p के साथ. अगेन राइट डाउन एनी टू डिसएडवांटेजेस ऑफ द मेश टोपोलॉजी. ये इस तरह के जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है इसकी हेल्प आप ले सकते हैं हमारे चैनल की प्ले लिस्ट 9th कंप्यूटर साइंस न्यू कोर्स की प्ले लिस्ट से. वहाँ पे तमाम एक्सरसाइजेस वगैरह सॉल्व हैं, वहाँ से आप इसकी हेल्प आउट कर सकते हैं अपने आप को. डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिफाइन बुलियन एक्सप्रेशन, व्हाट इज एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जी. राइट डाउन द स्टैंडर्ड नेम ऑफ आईपी एड्रेसिंग, define compound preposition, draw truth table using OR operators, define associative law, what is meant by bus topology, what is the use of SMTP protocol, make a start topology, write the name of the logical operators, Boolean algebra. Boolean values are the mentioned in which book. Draw the truth table using AND operators, define file transfer protocol, write the working of the router, how to make network of the networks. Network of the networks किसको कहा जाता है जी, इंटरनेट को कहा जाता है. Draw the truth table of OR operator, define Boolean expression, why do you mean by compound preposition, what do you know about internet, write two examples of IPv4 addressing standard, what is the communication channel, उसके बाद AND operator का truth table, identity law, use of the truth table, what is meant by sender, write the use of the file transfer protocol, how many IP addressing standards are here, write their names, draw a truth table of not operators, write down the negative preposition, today is holidays की negative preposition क्या होगी, today is not holiday, define truth table, define communication channel, उसके बाद है जी what is header in message, डिफाइन पैकेट. हेडर क्या होता है जिसमें आपकी एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है. उसके बाद है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, प्रूव दैट ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट बी डॉट ए. ये आपके जो है वो यूनिट नंबर 2 में लॉज है उसमें से है. मेक अ ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर फॉर द टू वेरिएबल्स, हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ द कनेक्शन, राइट नेम्स, राइट वन एडवांटेज ऑफ द mesh topology, define physical layer. What is meant by copyright? Explain fraud and misuse. Write HTML code to break the line. Define hypertext. Why OL tag is used. Ordered list के लिए use होता है. Differentiate between hyperlink and anchor. Draw truth table of not operators. Negative preposition of today's holiday. Truth table को define करें. Communication channel को define करें. ये सारे जो है वो question repeat हो रहे हैं. Define packet, उसका define client server overuse, write two issues related to the data security, define singular tag, write names of the two attributes of image tag, image की आपने height width आप बता सकते हैं इसके, या जो भी आप ज़्यादा बेहतर आता है वो attribute आप इसके बता सकते हैं. How to insert space in web page text, space आपने कैसे देनी है. Write tag code of for applying of the background color blue and foreground color red through a web page. What is meant by random Caesar cipher method, how does spyware damage, define nested list, what do you mean by the phrase HTML is not case sensitive, define call span, write the HTML code using image tag. उसके बाद है जी व्हाट इज DOS अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में आपने बताया. डिस्क्राइब टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिशिंग वेबसाइट, राइट HTML कोड टू ऐड हॉरिजॉन्टल लाइन. HR का टैग आप इसमें बता देंगे. HTML कोड टू मेक वर्ड स्टूडेंट इटैलिक, इसको इटैलिक कैसे बनाना है जी, इसमें I का टैग आप लगा देंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा. और डिफाइन वेब सर्फिंग, व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डिफाइन हार्ड डिस्क लोडिंग. और उसके बाद है जी व्हाट इज द यूज ऑफ OL, रिपीट हो रहा है. राइट द HTML कोड टू मेक वर्ड पाकिस्तान बोल्ड, इसके लिए B का टैग आप लगा देंगे. डिफाइन पेयर टैग, what is difference between width and height attribute of the image tag, what is online piracy, difference between hackers and hacking, what is meant by body section in HTML, write down the code of the given list in HTML, BIS और BIS को आपने इस तरह से जो है इसका कोड लिखना है. इसमें आप जो है ऑर्डर्ड लिस्ट लगाएंगे OL का टैग के साथ. हाउ टू एड पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज, इसमें बॉडी के टैग में आप बैकग्राउंड के एट्रीब्यूट यूज करेंगे. हाउ टू एड पेयर टैग, व्हाट इज मीन बाय काउंटर फिटिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड हैकिंग, मीन बाय sabotage, write down a tag code of the two different headings of the BIS, what is difference between online piracy and counterfeiting, compare the copyright and trade secrets.
उसके बाद है जी राइट अ कोड ऑफ HTML और फॉन्ट साइज टेक्स्ट 24 पंजाब को आपने लिखना है 24 फॉन्ट साइज के साथ। इसमें फॉन्ट का टैग लगेगा और उसमें साइज जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 24। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लिस्ट इन HTML, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड, और उसके अलावा एक डेफिनेशन लिस्ट होती है। बट तीन तरह की जो है वो लिस्ट होती है। व्हाट इज साइबर क्राइम, write a code to insert hyperlink on the web page, define pair tag, why web browser is used, what is the difference between tag and element in HTML, write short answers to any four, encrypt the word HTML with the method of Caesar cipher, HTML is not case sensitive, define its own word. What is counterfeiting, which name of the tag used in HTML for adding an image, define head section, what is hyperlink, what is mean by data privacy, what is mean by trade secret, or write HTML code to insert picture into the web page, और डिफाइन वेब सर्वर। यूएल टैग जो है वो अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूज होता है। डिफरेंस बिटवीन बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो है वो वेब पेज का कंप्लीट का जो है वो कलर होता है। फोरग्राउंड कलर जो होता है वो उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसका जो है वो कलर है। राइट शॉर्ट आंसर, व्हाट इज मीन बाय डाटा प्राइवेसी, व्हाट इज मीन बाय ट्रेड सीक्रेट, HTML कोड टू इंसर्ट पिक्चर, ये भी बहुत दफा जो है वो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। डिफाइन वेब सर्वर, वाई यूएल टैग इज यूज अनऑर्डर लिस्ट के लिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद हम आपको बताते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन, जहाँ तक हमसे हो पा रहा है हम इसको आपको सॉल्व कर करके बता रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन फोर टाइप्स ऑफ द टेस्ट डाटा, define communication system, explain why any three components of the communication system, what is phishing attack, describe three characteristics of a phishing email, discuss for notation use in formation of an algorithm, define row span, define table, difference between integrity and confidentiality, what is the purpose of the password, इटैलिक बनाना है इसको पाकिस्तान के वर्ड को, और HTML कोड हमने लिखना है फॉन्ट का टैग इस्तेमाल करते हुए। आप कोई भी डाटा एक लेके आई लव पाकिस्तान बेशक ले लें और उसको जो है फॉन्ट के टैग पे बंद करके दिखा दें कि किस तरीके से लगता है। ये फॉर्मेटिंग टैग्स वाला जो है टॉपिक है वहां से आपने इसको यूज करना है। डिफाइन रो स्पैन, विच एलिमेंट्स आर नीडेड टू अंडरस्टैंड द HTML लैंग्वेज, उसके बाद है जी piracy, give an example, write an example of the good password, which tag is used to add picture, image का tag होता है जी use, which are the attributes of the table tag, टेबल के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं आप क्या क्या उसके अंदर यूज कर सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय पेयर टैग, राइट नेम्स ऑफ एनी टू वेब ब्राउजर, इसमें आप क्रोम लिख सकते हैं, इसमें आप जो है मोजिला फायरफॉक्स लिख सकते हैं, इसमें आप इंटरनेट एक्सप्लोरर लिख सकते हैं। What is soft lifting, write a note on ring topology, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एंड mesh topology, write down any four ethical issues related to security, explain any four flowchart symbol in detail, differentiate between bus topology and mesh topology, write any four examples of the piracy concerns arise through the mass collection of the data, define flowchart, write a note on any three advantages and disadvantages of the flowchart, what is mean by topology, describe ring topology in detail, what is cybercrime, explain its three types, व्हाट इज टेस्ट डाटा, और उस टेस्ट डाटा के थ्री टाइप्स आपने बतानी है। डिफाइन TCP IP प्रोटोकॉल, फर्दर डिस्क्राइब टू लेयर्स ऑफ द नेटवर्क लेयर मॉडल, encryption, explain the importance of encryption for everyday life on the internet, what is meant by planning of the problem solving, explain different strategies of the problem solving, right, explain with detail difference between star topology and ring topology। उसके बाद है जी डिफाइन फिशिंग अटैक, आल्सो राइट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिशिंग ईमेल एंड फिशिंग वेबसाइट, राइट जी। ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन फोर सिंबल्स ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, write down notes on file sharing or hardware sharing, what is the use of the password, also write down the three characteristics of the good password, explain any four symbols which are used in the flowchart, explain basic components of the data communication system, what is meant by phishing attack, discuss characteristics of, ये फिर repeat हो रहा है जी, what is meant by defining a problem, explain understanding a problem, write a note on star and ring topology, why do we use data encoding, also write in three data security issues, define HTML, which tag is used for horizontal line in HTML, why ampersand no backspace is used in HTML, स्पेस लेने के लिए जो है ये वाला यूज होता है टैग, define sabotage, define hacking, give examples of the
टैग, इसमें से कोई सा टैग आप बता सकते हैं, इमेज है, HTML है, हेड है, बॉडी है, सब ये जो है वो पेयर टैग है, क्योंकि इसका एंडिंग टैग जो है वो मौजूद होता है। राइट अ नोट ऑन टैग ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद है जी व्हाट इज मीन बाय स्टार टोपोलॉजी, हाउ डज इट वर्क, एंड आल्सो राइट्स टू एडवांटेजेस। Write a note of importance of the encryption for everyday life. Define algorithm. Write a note on 3 advantages and disadvantages of the algorithm. Define data communication. Describe 3 components. उसके बाद what is software piracy, explain its any 3 types, why is problem, what is problem solve analysis, write 4 advantages of the flow chart and 2 disadvantages of the flow chart. Define topology, write a note on any 2 network topologies also. What is cyber crime, write a note on advanced fee fraud and hacking. What is meant by test data, explain importance of the testing with examples. What is TCP/IP protocol suite, write a note about any 2 protocols. Right, define software piracy, also explain any 3 types of the software piracy. Draw 4 different symbols of the flow chart and write description. Define computer network, also discuss types of the connection in network. Define encryption, also describe the importance of the encryption for everyday life on the internet. Define an algorithm, also write 3 advantages and 3 disadvantages of the algorithm. Define bus and mesh topology and also draw a diagram of the port topologies. Write a note on cybercrime. Any 4 पे आपने बताना है, also give an example of the each crime. ये थे जी तमाम पूरी बुक के लॉन्ग एंड शॉर्ट, और जो पेपर में इन्हीं में से आपका पेपर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और 20 मिनट की वीडियो में तकरीबन आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपने ज़रूर कर लेने हैं, इसे बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उसमें आपका टाइम जो है वो कम लगेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन तमाम फ्रेंड्स के साथ। चाहते हैं कि पेपर आप उनका भी अच्छा हो, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ और इसमें से आपका कितने % जो है वो पेपर आया। और हम आपके लिए दुआ गो हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।